मैं ऊपर मूलियों को एक नज़र मार के उन्होंने आटा खाया नहीं था। शायद वो इतना उसने खा
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है बच्चों? आप लोगों के ठीक ठाक हैं? जी मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरी आवाज बेटा सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, विल क्विकली स्टार्ट विद द लेक्चर। हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया आज, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन आई थिंक। जी, आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है, the outline for today's lecture is doctor-patient relationship, professionalism in healthcare, professional care development, and assessment of attitude. So what is a doctor-patient relationship? Basically, doctor-patient relationship, it is the capacity of the doctor to appreciate the complexity of human behavior, his ability to empathize, his skills of active listening, effective verbal and non-verbal communication. ठीक है, basically एक जो डॉक्टर होता है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मेन प्रोफेशन है अकॉर्डिंग टू हिज फील्ड, दैट इज टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। लेकिन फॉर दैट द डॉक्टर इटसेल्फ नीड्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। हर पेशेंट जो है वो एक तरह से नहीं होता, हर पेशेंट एक डिफरेंट कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द डॉक्टर नीड्स टू रियलाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द his patient, and then he should have the ability to empathize with the patient, ठीक है। आप पेशेंट की बात को सुने, उसके साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, so that the patient can have a trustworthy relationship with you, and as a result आपका जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, it is going to be better, and it will obviously be effective in terms of the treatment plan. ठीक है, so a doctor must be sensitive to the effects of history, culture, and environment to his patients. He should be trustworthy. He should have unconditional positive regard for the patient. Means to say that every person has a different history, different cultural, socio-economic setup. So the doctor must be, the doctor must make sure that he or she understands that a person has a different culture. He should not be insensitive to his culture. For example, if a female says that I don't want to be, clinically examined in front of a lot of male patients, then a doctor must understand her scenario and not try to make fun of her or say something that might hurt the patient. So he should have he should show sensitivity to the different socio-economic status and the cultural backgrounds that a patient may have. So these are certain models of doctor-patient relationship that are followed by various healthcare professionals around the world. Vertical model, teacher-student model, and the horizontal model. So what is a vertical model? A vertical model is where the doctor completely takes over the process of care with no role of the patient. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है वर्टिकल मॉडल में कि डॉक्टर जो है वो पूरा का पूरा डॉक्टर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। पेशेंट का कोई रोल नहीं है, पेशेंट जो है ही और शी हैज नो से इन हिज ट्रीटमेंट, और डॉक्टर जो है ही इज द अल्टीमेट सोल प्रोवाइडर. For example, when a patient is unconscious, immobilized, or has an altered state of consciousness, ठीक है, तो this is a vertical model because patient को नहीं पता कि डॉक्टर उसको क्या इंजेक्ट कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट प्लान दे रहा है, because the patient is unconscious, ठीक है, कोमा में है पेशेंट, वेजिटेटिव स्टेट में. So the doctor completely is taking over the process of care. This is known as the vertical model of the doctor-patient relationship. Next up, we have the teacher-student model. Teacher-student model में the doctor plays a similar role as the authority figure, that is the teacher or the parent, who dominates, controls, and guides the patient.
For example, a patient who is recovering from a surgical intervention, ठीक है, which is this model is usually being used, ठीक है, teacher student model इस्तेमाल किया जाता है. Basically इसमें जो doctor है, he is the one who is basically the dominating figure, he is the authoritative figure, but उसके साथ साथ he has to be very show empathy to the patient as well. ठीक है, for example, a person is recovering from a surgical intervention, then as if the doctor is following the teacher student model, then according to that, the doctor will guide the patient that he or she needs to take care of his surgical wound. He needs to make sure that his dressing is regularly cleaned and changed, and he needs to make sure that he has a good diet so his wound heals rapidly, and he needs to make sure that if he has to be immobilized, or so he should not move a lot so that his wound can try to recover in a short period of time. So these are certain scenarios in which the patient does not have a very vast knowledge about that particular thing, but the doctor is there to guide the patient, and he guides the patient and as well as show empathy to the patient. So this is a teacher student model. Even though the doctor has an authoritative figure in this model, but still he is supposed to show empathy and care to the patient as well. Because if he's not showing care and empathy, he's only being dominant and authoritative, then ultimately the student, which is the patient in this case, will not listen to the doctor, and as a result, this can negatively influence the patient's treatment. Okay, next model that we have is the horizontal model. Horizontal model is also called as the mutual participation model. Okay, इसमें basically this model is generally being used when the patient is also a healthcare professional, or a patient is very educated and he's very well aware about his medical condition, and he actually asks the doctors various questions on how he can take care of himself and how he can go on with the treatment. So this is something for persons who are usually such type of patients. They also belong to the medical field, or either they are very educated or they are very well known about their medical condition. So in this model, the doctor and the patient behave as partners in the process of healing and care. Patient is fully aware and informed and plays an active role in the treatment process. For example, a patient with diabetes and renal failure on dialysis are active partners in management process. ठीक है, diabetic patient जो होता है वो उसको फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन रिकमेंड किया, ठीक है, इंसुलिन रिकमेंड करने के साथ साथ आपने पेशेंट को गाइड करना है दैट यू आर सपोज टू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग ओवर फूड्स दैट हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऐसी चीज ना खाएं जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर हो, जिससे आपका शुगर जो है शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए. ठीक है, तो अब जो इस तरह की डिजीजेस होती हैं जिसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो ऑल द टाइम आप हॉरिजॉन्टल मॉडल के साथ कर सकते हैं. वो टीचर स्टूडेंट मॉडल उसमें यूजुअली नहीं होता, बिकॉज पेशेंट जो है वो घर चला जाता है. ठीक है, पेशेंट जब घर चला गया तो डॉक्टर उस पर नजर नहीं रख सकता कि वो क्या चीज खा रहा है, क्या उसने मेडिसिन टाइम पर ली है नहीं ली. The horizontal model is usually required in conditions where a lifestyle modification is required to treat a medical condition, or in cases where the patient itself is someone who already belongs to a medical field and he or she is well aware of his or her situation. ठीक है, रीनल फेलियर का पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है, जब तक पेशेंट फुली तौर पर इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जो कि लाइफ लॉन्ग होता है until and unless the patient gets to have a treatment transplant being done. ठीक है, तो उसमें अगर पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, पेशेंट विल गेट एग्जॉस्टेड और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट फेलियर होगा. तो ऐसी बीमारियां, ऐसी कंडीशंस जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग करती हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ हम फुली तौर पे क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्चुअली उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज वंस एक पर्सन को डायबिटीज हो जाए, वो फुली तौर पे ठीक नहीं होता. उसकी डायबिटीज को आपने सिर्फ कंट्रोल करना होता है विद डाइट एंड विद मेडिकेशंस. तो ऐसी डिजीजेस के लिए हॉरिजॉन्टल मॉडल जो है इट इज यूजुअली रिकमेंडेड. आप पेशेंट को बिठाएं, इवन दो अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं है, स्टिल आप पेशेंट को बिठा के उसको हर चीज उसको बेहतर तरीके से गाइड करें. बिल्कुल एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में उसको चीज अंडरस्टैंड करें, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि उसकी लाइफ लॉन्ग एक डिसेबिलिटी है सॉर्ट ऑफ. ठीक है,
तो वो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं, कोई एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं है कि 5 days पेशेंट करेगा एंड अल्टीमेटली पेशेंट ठीक हो जाएगा और फिर it's not going to finish like that. It is something which has to be done for the rest of the life for most of the cases. तो ऐसे cases में horizontal model is usually recommended. Any questions up till now? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, what are certain dangers in the doctor-patient relationship? ठीक है, these models or bonding are good to some extent, but not on the base of friendship and sympathy. ठीक है, डॉक्टर का और पेशेंट का जो एक रिलेशन होता है वो फ्रेंडशिप और सिंपैथी से जो है बहुत ज्यादा दूर होता है, यू कैन से। आप पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट भी हो सकते हैं बिकॉज पेशेंट इज शेयरिंग वेरी पर्सनल डिटेल्स विद यू। आप बहुत ज्यादा पर्सनल उसकी लाइफ को भी जान सकते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू बी making friendship with the patient and showing the sympathy. ठीक है, so number one danger that a doctor may have, a relationship may have, is that the doctor's fantasizing that only they can rescue the patient from all the troubles of the world. ठीक है, so this is not the case. जब patient आपके पास आया है, हो सकता है उसकी बीमारी कोई psychological problem की वजह से aggravate कर रही हो, या उसके या maybe he or she may have certain family issues या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यू शुड रियलाइज कि आपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द बीपीएस मॉडल आप उसको ट्रीट करें, बट देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स जिनका ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, यू बिकॉज वी बिलीव दैट ऑब्वियसली God is the one who is giving life to every patient and health and wellness to every patient, so we should realize that we are not the ones who can rescue the patient from all sorts of troubles. Okay, there may be some conditions just the patient he or she has to work along himself, or maybe he or she has to live with that disability. An enthusiastic medical student handing over financial and material help or seeking the same, both are unethical. ठीक है, medical student जो कि unenthusiastic बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। enthusiastic student it means कि for example एक medical third year medical का student है और उसका for example medicine का जो है एग्जाम था। ठीक है, उसको कहा गया कि आपने इस पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और आपने डायग्नोसिस देना है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस दें या प्रॉपर डायग्नोसिस आपने हमें देना है। ठीक है, तो व्हाट डज दैट स्टूडेंट डू इज कि वो पेशेंट के पास जाएगा, उसको थोड़े से पैसे देगा और उसको कहेगा कि मुझे अपनी बता दो कि तुम्हें क्या बीमारी है। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग एनी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग he gets to know the diagnosis of his disease by asking the patient himself. So this is a very serious scenario, because अगर इस तरह से एक medical student करेगा तो ultimately what is going to happen that the patient will not have a trust on the doctor. ठीक है, patient next time जो है वो doctor पे उस तरह से trust नहीं करेगा and ultimately it can harm the doctor-patient relationship. The doctor's inability to leave behind the distress and problems of the patient when away from a clinical setting. ठीक है, कि डॉक्टर घर आ भी गया but still he or she is in the जैसे कोविड के आजकल बहुत ज्यादा cases होते हैं, तो obviously as a human आप you can get आप उससे जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं. So when you leave the hospital and when you are home but still you are आपके माइंड में वही डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स जो है वो चल रही होती है. So this is something which can happen, but it is considered something which is against professionalism. आप अपने clinical setting से away हैं तो you should try to make the most of that time and not think about the problems of the patient. A need to control everything in the life of the patient and try to prevent death, which is not possible in all cases. ठीक है, you should realize कि आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, but still the life and death is in the hands of the creator, and we should हम अपने आप को हर वक्त mentally we should try to prepare ourselves that if the time of the patient has arrived then we cannot prevent death whatever the situation is. A doctor visualizing his or her own troubles and complexes in patients, for example a doctor having a disturbed relationship with his father, a doctor may start to pass value judgments or become judgmental in his relationship with the patient. ठीक है, psychological reactions in doctor-patient relationship. These are 6 psychological reactions which
can happen in a doctor patient relationship. The first three are important. ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है और आपके जो है वैसे for your learning point of view they are very important. So we are going to learn the first three in detail. Number one is the transference. ठीक है, ट्रांसफरेंस को इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन आस्क. So what is transference? Transference is a type of reaction in which redirection of a client's feeling from a significant person to a therapist. Basically, what is transference? Transference occurs when a person redirects some of their feelings or desires for another person to an entirely different person. दरवाजा बंद कर. Okay, desires and wishes are originally linked with an important figure in the patient's early life. For example, mother, father, or someone the patient is close to. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है ट्रांसपेरेंस में कि आप जो है अपने डॉक्टर को, ठीक है, अपने मदरली या फादरली फिगर या समवन किसी जिससे भी आप क्लोज हो उससे उसको एसोसिएट करना शुरू कर दें, अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल जैसे नॉट ओनली अ डॉक्टर, फॉर एग्जांपल नर्सेज होती हैं, ठीक है, तो नर्सेज जो होती हैं दे हैव आईसीयू में हर पेशेंट पे दो या एक नर्स जो होती हैं दे आर अपॉइंटेड एंड दे आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट. तो ऐसे सिनेरियो में इट इज वेरी मच लाइकली दैट अ पर्सन मे गेट ओवरली अटैच्ड विद द नर्स बिकॉज शी इज taking care of the patient very well. So patient may have a feeling that she's just like my mother or she's just like my wife, or आप अपनी feelings को redirect कर जाते हैं to that person. So this is called transference. ठीक है, और transference का opposite is counter transference. Counter transference means कि जो therapist है, थेरेपिस्ट में आपका डॉक्टर आ सकता है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ आ सकता है, आपका साइकियाट्रिस्ट आ सकता है, वो अपने पेशेंट को किसी अपने क्लोज रिलेशनशिप से एसोसिएट करना शुरू कर दे. ठीक है, सो द ऑपोजिट ऑफ ट्रांसफरेंस इज काउंटर ट्रांसफरेंस. इन ट्रांसफरेंस द पेशेंट इज एसोसिएटिंग डॉक्टर to someone who the patient is very much close to, and in counter transference the doctor is associating his patient with someone who is very close to him. For example, एक stroke का patient आया है emergency ward में, ठीक है, और जो डॉक्टर है उसके जो वालिद साहब थे वो भी stroke से ही उनकी वफात हुई. तो obviously the doctor can have an association with that particular patient because उसकी age भी उसके father वाली है और उसको disease भी वही condition हुई है. तो maybe the doctor can get overly attached with the patient and उसको ज़्यादा time दे. So this is counter transference. So if an adult patient in the medical ward wants to be examined by one particular doctor and feels that the same doctor comes to his bed first and wants to spend longer time in the company of the same doctor, it may be on an account for paternal transference. ठीक है, तो ये एक ट्रांसफरेंस की एग्जांपल है कि मेडिकल वार्ड में एक अडल्ट पेशेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड है. So this is known as transference. ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेंस. इसमें ये होता है दैट मदरली फिगर, दिस इज अ थेरेपिस्ट, दिस इज अ पेशेंट. So during childhood, the child has, the mother says that I don't have time for this. Means that the mother feels that her child is too needy and clingy. Okay, so this is something which is now set up in the mind of the child. Okay, and now in the future, when the child is going to a therapist, so he or she may have the same association that he or she has with his mother during his childhood, and she may think that I really want to come in next week. I bet she'll think I'm too needy. Because during childhood the mother gave a association to the child that she is too needy or clingy, so the child may have the same association with the therapist in the later life because she's associating with the therapist to just like her mother. So this is an example of transference, जिसमें patient जो है वो अपने therapist, अपने medical doctor, अपने dentist, अपने paramedical staff के साथ associated हो जाता है. on थोड़ा सा you can say कि personal level पर जो है वो उसको associate करता है to someone जिससे वो बहुत ज्यादा अपनी life में close होता है. ठीक है, counter transference is a type of reaction. Any question related to transference up till now?
मैम जो ट्रांसपेरेंस होगा ये डॉक्टर के लिए तो ऑफेंसिव हो सकता है या लाइफ थ्रेटनिंग भी। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं आप कह सकते, या ऑफेंसिव भी आप नहीं कह सकते। देखो ऑब्वियसली जब पेशेंट एक ओवरली अटैच्ड होगा डॉक्टर के साथ, ऑब्वियसली द डॉक्टर विल रियलाइज इट कि द पेशेंट इज मोर पर्सनली इन्वॉल्व हो गया, लेकिन उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं कह सकते। अगेन वही बात आ जाती है दैट यू आर सपोज टू काउंसिल द पेशेंट। आपने पेशेंट को काउंसिल करना है और आपने पेशेंट के साथ प्रोफेशनलिज्म ही शो करना है, ठीक है। वेदर द पेशेंट इज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू, और मे बी द पेशेंट आस्क्स फॉर फेवर्स फ्रॉम यू बिकॉज वो ट्रांसपेरेंस का शिकार है, लेकिन आपने पेशेंट के साथ प्रोफेशनलिज्म ही रखना है। आप प्रोफेशनलिज्म रखेंगे तो अल्टीमेटली द पेशेंट विल रियलाइज इट ऑन हिज और हर ओन, और वो चीज जो है वो बैलेंस में लेके चलेगी। अगर आप ट्रांसपेरेंस को अगेन आप भी उसके साथ उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तो दैट कैन हार्म द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन। बट इफ यू आर शोइंग प्रोफेशनलिज्म, आप पेशेंट के साथ उसी तरह से डील करें जिस तरह आप अपने बाकी पेशेंट्स को डील करते हैं, तो अल्टीमेटली दिस बिहेवियर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, next is counter transference. Counter transference is a type of a reaction in which the emotional responses of the doctor are directed towards the patient in the form of his or her own needs, desires, and feelings. It is defined as redirection of a psychotherapist's feelings towards a client, or more generally as a therapist's emotional entanglement with a client. Patient in such situations remind the doctor of a well-loved or a hated from the past. ठीक है, तो अब ये ऑपोजिट हो गया। ये काउंटर ट्रांसफरेंस में डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को एसोसिएट कर रहा है अपने किसी पर्सनल रिलेशनशिप के साथ। For example, a young doctor during his house job was found to spend long hours in the care of a 60-year-old patient with hemiplegia. Reason was that the young doctor had failed to look after his father who died of stroke many years ago. ठीक है, अब वो डॉक्टर जो था उसके फादर को भी स्ट्रोक हुआ था, और ड्यूरिंग हिज स्ट्रोक के पीरियड में द डॉक्टर वाज अनएबल टू लुक आफ्टर हिज फादर। सो मे बी ड्यूरिंग हिज हाउस जॉब उसको कोई भी पेशेंट जो है वो अपने फादरली फिगर की तरह जो है वो उसको वो प्रिज्यूम करे। A therapist's attunement to his own counter-transference is nearly as critical as his understanding of the transference. ठीक है, अब इसमें यह है कि ये थेरेपिस्ट है और ये पेशेंट है, and patient says that doctor, I had a very difficult childhood. ठीक है, and maybe the doctor also had a very difficult childhood, or maybe the doctor sees his patient as his daughter. ठीक है, तो वो खुद भी रोना शुरू कर दिया उसने, because he is visualizing his own childhood, or maybe he is visualizing the therapist as someone who's his daughter. तो वो emotionally attached हो गया. So this is counter transference, and this is also something which is very harmful for the patient, because अगर doctor patient के साथ overly attached होगा तो ultimately the doctor will also the patient will also be attached to the doctor, and as a result it can harm the doctor patient relationship. ठीक है, any questions up till now? No, ma'am. ठीक है, सो हाउ कैन वी डील विद दिस सिचुएशन? हमने इस सिचुएशन अगर इस तरह से हो जाती है ट्रांसपेरेंस की या काउंटर ट्रांसपेरेंस की, तो हमने उसको किस तरह से ओवरकम करना है? You should never make the statement, you remind me of my mother, so have the constant awareness of the two phenomena. ठीक है, अगर आपने एक दफा पेशेंट को या डॉक्टर ने पेशेंट को या पेशेंट ने डॉक्टर को ये बात कह दी दैट यू रिमाइंड मी ऑफ माय मदर, तो ये बात जो है वो पेशेंट भी इस चीज को वो करेगा दैट I'm just like her mother and she's going to take care well of me. तो ये बेसिकली इस तरह से इस फीलिंग को एग्रीवेट करने वाली बात होगी कि आपने पेशेंट के साथ इस चीज को शेयर कर दिया या पेशेंट ने डॉक्टर के साथ इस चीज को शेयर कर दिया. सो इवन इफ यू आर फीलिंग सच अ थिंग, अगर आपके माइंड में आपके दिल में ये बात आ भी रही है, तो यू आर सपोज टू सप्रेस दैट फीलिंग एंड नॉट शेयर इट विद योर पेशेंट और विद योर डॉक्टर. If this doesn't work, then it's better to shift the care of the patient to an experienced colleague. ठीक है, अब इसमें यह है जैसे हाउस जॉब की अभी हमने स्टूडेंट की बात की that he or she was taking care of the stroke patient because वो अपने फादर का ख्याल नहीं रख सका. ठीक है, तो वो मे बी उसका ख्याल रखे, बट still he or she should not share it with the patient itself. ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि वो अपनी इस चीज को सप्रेस नहीं कर पा रहा, then it is better कि वो उस पेशेंट से try to stay away from that patient and hand over that patient to someone who is more experienced in his field.
because ultimately अगर वो अपनी feelings को suppress नहीं कर पा रहा तो it can actually harm the doctor patient relationship. ठीक है. Another next psychological reaction is resistance. ठीक है. Resistance is a reaction which involves the patients who constantly defy the prohibitions by the doctor in spite of repeated warnings of serious consequences. ठीक है. This is something which is very common कि doctor जो है वो patient को बार-बार prohibit कर रहा है that you're not supposed to smoke or you're not supposed to eat a lot of fatty food because this is going to aggravate your coronary heart disease और आपको heart attack myocardial infarction हो सकता है which can be lethal for you, but still the patient is constantly doing the same thing over and over again, so this is known as resistance. For example, a patient of coronary artery disease who in the spite of regular advice from the doctor refuses to give up smoking, eats red meat regularly, so this is the resistance in the doctor patient relationship. ठीक है. Any questions up till now? अभी तक हमने transference, counter transference और resistance को study किया. मैम ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस इन केस अगर एक साथ हों, इन केस अगर एक साथ हो, ठीक है, अगर एक साथ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. ठीक है. अगर पेशेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है और डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है तो अगेन फिर वही बात आ जाती है ना कि पेशेंट तो उतना प्रोफेशनल नहीं है जितना एक डॉक्टर प्रोफेशनल है. तो यहाँ पर फिर एज अ डॉक्टर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल करें, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करें, एंड स्टिल इफ यू थिंक चीज आपकी कंट्रोल में नहीं है और पेशेंट भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, देन अल्टीमेटली यू शुड हैंड ओवर सच पेशेंट्स. ठीक है. ऐसा बहुत कॉमन होता है दैट इवन एज अ डेंटिस्ट आई फील दैट if I feel that a person is asking for undue favors, or if the person is becoming overly attached with me during the treatment and asking for unusual favors, so ultimately if I cannot handle that patient very well, so I ultimately refer that patient to one of my colleagues so that वो बात बिल्कुल खत्म हो जाए. बिकॉज अल्टीमेटली अगर काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफर एक साथ होगा तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर फिर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहेगा, एंड इट विल बी अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द डॉक्टर एंड द पेशेंट एज. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर. अ हेल्दी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एक्सीलेंस ऑफ अ डॉक्टर. ठीक है. प्रोफेशनलिज्म के लिए हमें 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है, जिसमें नॉलेज होना जरूरी है, स्किल्स होना जरूरी है और एटीट्यूड होना जरूरी है. ठीक है. Now why do we need knowledge? ठीक है. Knowledge is that we should be able to distinguish normality from abnormality in the light of not only the medical terms but also from a social and psychological perspective. Relate biological factors with psychosocial factors in the health and disease. Use principles of behavior sciences in clinical interviews, assessments and management plans. ठीक है. Knowledge का क्या मतलब है कि आप प्रोफेशनलिज्म तब करेंगे अगर आपको पेशेंट की कंडीशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है. आपको पहले नॉर्मल चीज का पता होगा तो आप डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे ऑल ऑफ यू आर supposed to learn anatomy, biochemistry and physiology in the early years of your education. ठीक है. ये सब नॉर्मल चीजें आप पढ़ते हैं. फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शनिंग आप पढ़ते हैं. जब तक आप नॉर्मल फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ सकते, which is the abnormal functioning of the any part of the body. So you should be able to you differentiate normality from the abnormality. ठीक है. आपको पेशेंट की मेडिकल कंडीशन का पता हो, उसके अलावा आप बीपीएस मॉडल के अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कोरिलेट कर सकें विद साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स. ठीक है. अदर देन दैट आप पेशेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें. दीज आर ऑल अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉलेज. अगर ये तीनों चीजें आपके पास इनकी नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट अ वेरी गुड मेडिकल प्रोफेशनल. Request not only laboratory radiological investigation but also make social and psychological inquiries. ठीक है. जैसे पेशेंट एक आपके पास आया है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा पेट दर्द से आपके पास आया है और मदर उसकी कंप्लेन करी कि इसको अक्सर डायरिया रहता है और ये बहुत वीक हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा. ठीक है. आपने पेशेंट को देख लिया, हिस्ट्री ले ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर दिया, आप उसके लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी भिजवा देते हैं. ठीक है. आपको इन सब चीजों की नॉलेज है तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर दिया. बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज. पेशेंट से पूछे that in which area of the city that they belong to, whether clean water is available in that area. अगर clean water नहीं available तो वो filtered water पी रहे हैं या वो वही गंदा पानी इस्तेमाल करें. तो you should try to make social and psychological inquiries as well, because these inquiries they can actually help you in reaching a diagnosis of the patient.
use pharmacological as well as non-pharmacological interventions and apply evidence based to clinical situations. ठीक है, वही बात कि pharmacological में आपने patient को medicine के साथ साथ आपने non-pharmacological intervention भी दे रही है। arthritis के patient को आपने pharmacological drugs भी देनी है, उसके साथ साथ non-pharmacological intervention में आपने patient को anti-inflammatory diet recommend करनी है, आपने patient को कहना है कि थोड़ी बहुत movement रखे, बिल्कुल immobile ना हो। So these are all according to the knowledge. अगर आपको medical knowledge होगी तो आप इस सारी चीजों पे implement कर सकते हैं, otherwise you cannot do that. Next are skills. Skills में we have 4 types of skills that doctor may should have: written communication skills, verbal communication skills, patient management skills, and skills in research. Now, what are written communication skills? Written communication skills में basically we should be able to write the comprehensive history of the patient. ठीक है, आपकी जो writing है सबसे पहले वो legible होनी चाहिए कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो किसी भी person को understanding हो उसकी. You should be able to update medical records in clear, concise, and accurate manner, write management plan, discharge summaries and referral notes, and demonstrate competence in medical writing. ठीक है, मतलब ये कि आप history patient की ले रहे हैं तो आप इन सब चीजों को written में भी लिखिए. आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेके सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, बिकॉज स्पेशली ये चीजें जो हैं हॉस्पिटल सेटअप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इन हॉस्पिटल 12 आवर्ली आपकी ड्यूटी है, आपने चले जाना है, नेक्स्ट डॉक्टर ने आ जाना. तो इफ ऑन द फाइल ऑफ द पेशेंट यू हैव रिटन अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री इन ऑल द वाइटल्स एंड द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, देन ऑब्वियसली इट विल बी मच इजियर फॉर द नेक्स्ट ऑन ड्यूटी डॉक्टर टू overtake. Or even in private clinical settings, now obviously if you're dealing with a lot of patients, so human error के accordingly आप भूल भी सकते हैं कोई चीज. So it's better to write down everything that the patient is telling you, और patient के लिए जो भी management plan आपने recommend किया है उसको भी आप जो है वो written में अपने पास रखें. Next is verbal communication skills. Verbal communication skills are very important if you want to establish a professional relationship with the patient in order to obtain a history, conduct a physical examination, and provide appropriate management. ठीक है, हमारे यहाँ इस चीज को इग्नोर किया जाता है, बहुत ज्यादा verbally इतनी अच्छा communication नहीं किया जाता, and patients usually dissatisfied होते हैं डॉक्टर के साथ कि जो डॉक्टर ने बात नहीं की या डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा arrogant था या rude था. तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आप एक तरह से वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वर्बली एक अच्छी कम्युनिकेशन इफ यू आर डूइंग विद द पेशेंट, देन अल्टीमेटली पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, आपको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देगा, आपके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने में ही और शी विल नॉट बी दैट मच अनकंफर्टेबल. ठीक है, demonstrate usage of appropriate language in e-communication seminars, bedside sessions, outpatients and other work situations. ठीक है, आपकी language जो है वो appropriate होनी चाहिए. Demonstrate the ability to communicate clearly, considerably and sensitively with the patients. Provide information, care and counsel the patients. Use principles of effective communication skills. ठीक है, next up is that patient management skills. Patient मैनेजमेंट स्किल का मतलब ये है कि आपको नॉलेज है, आपको पता है कि पेशेंट को डायबिटीज है. ठीक है, आपने अच्छा कम्युनिकेट भी कर लिया, आपने सारा रिटर्न में लिख भी लिया, वर्बली भी आपने पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर लिया. अब आपने करना क्या है? ठीक है, मेन जो आपका पेशेंट आपके पास आता है वो पेशेंट की मैनेजमेंट चीज होती है. ठीक है, आपको पेशेंट की बीमारी का पता लग गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि अब आपने उस बीमारी को मैनेज किस तरह से करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, देन यू आर अ फेलियर. ठीक है, तो पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ द स्किल्स दैट अ डॉक्टर मे हैव. ठीक है, जिस तरह कल के लेक्चर में एक बच्चा पूछा था कि जी डॉक्टर जो है वो कोई लाइफ सेविंग ड्रग लगाना भूल गया या घबरा गया, तो ये सब बातें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में आती हैं, दैट हाउ मच मैनेजमेंट स्किल दैट अ डॉक्टर हैज. So you should be able to interpret and integrate the history and examination findings and arrive at an appropriate differential diagnosis and final diagnosis. ठीक है, आपने history ले ली, आपने examination कर लिया, आपने lab test reports देख ली. Now you need to come up to a differential diagnosis. Differential diagnosis क्या होता है कि for example पेट दर्द का patient है और आपके पास ये 4 बीमारियां जिसमें से एक बीमारी पेशेंट को हो सकती है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज अ सेट ऑफ डिजीजेस दैट अ पेशेंट मे हैव, एंड उसके बाद आप लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद आप एक फाइनल डायग्नोसिस पे आते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम. पेशेंट को जो है गर्ड का प्रॉब्लम था या पेशेंट को स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम है, वो फाइनल डायग्नोसिस आप यूजुअली लैब टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उस पर आप रीच करते हैं.
Demonstrate competence in problem identification, analysis, and management of the problem at hand by the use of appropriate resources and interpretation of investigation result. Means कि आपने पेशेंट का सीटी स्कैन करवा लिया, बट आपको सीटी स्कैन पढ़ना नहीं आ रहा, आपको पता नहीं लग रहा कि मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसमें से क्या चीज को असेस करना है, तो आपके पास पेशेंट मैनेजमेंट स्किल नहीं है. आपने रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करना है. Prioritize clinical problems for the start of intervention, ठीक है, which is very important. आप फॉर एग्जाम्पल एज ए डेंटिस्ट, अगर मेरे पास एक पेशेंट आया है और उसके 4 दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, बट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ सेंसिटिविटी. पेशेंट आपके पास आया कि मुझे किसी दांत में दर्द नहीं है, लेकिन मुझे अपने सारे दांतों में बहुत शदीद ठंडा गर्म लगता है और मैं कुछ खा पी नहीं सक रहा, ठीक है. तो एज अ डेंटिस्ट आपने उसके पहले वो जो 4 दांत जिनमें उसको जो फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपने वो नहीं पूरी करनी कि आप पहले उसकी फिलिंग करना शुरू कर दें. आपने पहले पेशेंट की क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे ज्यादा पेनफुल बात पेशेंट के लिए क्या है, जिसकी वजह से वो घर से उठकर आपके पास आया. तो वो पेशेंट की सेंसिटिविटी का इश्यू है कि पेशेंट को ठंडा गर्म लग रहा है. तो आप सबसे पहले उस चीज को जो है उस चीज को मैनेज करेंगे. उसके बाद आप जो है पेशेंट को बताएं जरूर दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट जो आपको हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग द प्रॉब्लम जो कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल कर रहा है या पेशेंट के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट कर रहा है. हो सकता है कि उसकी दांत की फिलिंग बहुत ज्यादा डीप चली गई हो और अल्टीमेटली वो रूट कैनाल की तरफ जा रही हो, बट पेशेंट को पेन नहीं है और पेशेंट आपके पास सेंसिटिविटी का इशू लेके आए. तो आप पहले सेंसिटिविटी इशू को डील करेंगे, रूट कैनाल को या फिलिंग को आप डिले या अपनी सेकेंड ट्रीटमेंट के तौर पर जो है उसको आप वहां पर करेंगे. Use evidence-based pharmacological and non-pharmacological interventions independently, undertake counseling and information care sessions. ठीक है. Skills in research में undertake literature search and collect evidence-based medicine and standard guidelines for use in clinical practice. ठीक है. Research जो है वो बहुत important है. As a healthcare professional, आप में से जितने भी जो हैं, जो बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट में जा रहे हैं या जो इमेजिंग में जा रहे हैं या जो न्यूट्रिशन में जा रहे हैं, ये ऐसी फील्ड्स हैं जो कि रिसर्च बेस्ड होती हैं. हर दिन रिसर्चेस हो रही हैं एंड न्यू थ्योरीज बन रही हैं, तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. You should read articles, आप literature को search करें, and you should try to keep yourself updated about the knowledge जो कि various different research से आप gain कर सकते हो. Interpret and use results of only peer-reviewed and standard articles to improve the clinical practice. Organize and actively participate in educational training and research activities. ठीक है, कि सिर्फ authorized articles की बात आप सुने जो सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या हकीकत टीवी जो यूट्यूब पे है उस पे अगर कोई बात आपने देख ली तो आप उस पे बिलीव ना करें. You should only use the results of standard articles जो कि एक अच्छे किसी जर्नल में पब्लिश हुए हैं, उनकी आर्टिकल्स की जो फाइंडिंग्स हो या रिजल्ट्स हो उन पे आपको अपने आप को करना चाहिए. ठीक है, ये हमने अब तक स्किल्स देखी. सबसे पहले हमने बात की कि एज अ प्रोफेशनलिज्म के लिए वी नीड टू हैव नॉलेज. Then professionalism के लिए we need to have skills. Next, what we need to have is attitude towards the patients, towards self development and towards the society. Now attitude towards the patients. ठीक है, डॉक्टर चाहे जितना मर्जी अच्छा स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, अगर पेशेंट का की तरफ उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट उसके पास नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर अच्छी बात भी कर ले ना पेशेंट से तो पेशेंट आधा वहीं पर ठीक हो जाता है. तो दैट इज अगेन के काउंसलिंग कितनी अच्छी की है. तो इफ यू हैव अ गुड एटीट्यूड विद द पेशेंट, आपने पेशेंट के साथ एक अच्छे तरीके से बात की है, आपने पेशेंट के साथ एम्पैथी शो की, आप उसको ये अंडरस्टैंड करा रहे हैं कि आप उसकी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो आपका एटीट्यूड पेशेंट के साथ जो है वो अच्छा होगा and ultimately patient will come back to you. You should establish therapeutic and ethical relationship with all the patients. You should demonstrate commitment to the BBS model in the assessment and management of the patient. Demonstrate sensitivity, empathy and understanding while performing physical and mental state examination. ठीक है, आप पेशेंट दिन में 10 दफा अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, ठीक है, बट जो पेशेंट आपके पास आया वो उसने पहली दफा ही अल्ट्रासाउंड करवाया आज. ठीक है, तो आपने इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना है कि फॉर यू दिस मे बी समथिंग जो कि बहुत एक नॉर्मल सी बात है या एक बहुत ही नॉमिनल सी बात है, पर पेशेंट के लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है. तो यू शुड ट्राई टू शो एम्पैथी टू द पेशेंट. Demonstrate the ability to work as a team member and a leader.
Consistently show consideration of the interest of the patient and community paramount and always above personal interest. Adhere to the principles of medical ethics under all circumstances. Exhibit highest standards of professionalism through the practices of integrity, respect for patient, colleagues, seniors, and juniors. Next is attitudes towards self-development. Demonstrate consistent respect for every human being, irrespective of the ethnic background, culture, religion, and socio-economic status. ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपनी आपका एटीट्यूड मतलब ये कि what rules that you have for the attitude towards the attitude of the patient. ठीक है, एक तो ये कि आप you should आप अपने patients में equality आप अपने पेशेंट्स में इक्वालिटी रखें. यू शुड नॉट डील पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एथनिक बैकग्राउंड. ठीक है, आप उनको जज ना करें. यू शुड नॉट बी जजमेंटल एट ऑल. डील विद द पेशेंट इन अ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रेजुडिस फ्री मैनर. यू शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग डिफरेंट पेशेंट्स. के एक पेशेंट जो आपके पास एक हायर एलीट क्लास से आया है और एक पेशेंट जो कि एक लोअर क्लास से आया, दोनों में आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी. दोनों आपके लिए पेशेंट्स होने चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू deal with them in the same way. Deal the patients with honesty, equity, and compassion. Demonstrate flexibility and willingness to adjust to the changing circumstances. Foster the habit and principles of self-education in order to constantly update and refresh knowledge as a commitment to the continuing education. Recognize stress in self and others. Deal with stress and support medical colleagues or patients constantly. ठीक है, बेसिकली ये कि आपने अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, आपने पेशेंट्स में के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, आपने अपनी नॉलेज को रिफ्रेश रखना है. यू शुड ट्राई कि ये सारी चीजें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में आ जाती हैं कि आप अपनी नॉलेज को फ्रेश रखें, आप अपने एटीट्यूड को ठीक रखें, आप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ. अब जैसे कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स के लिए वो पूरा जो है एक पीआर उनकी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव की जो वो किट होती है, दे आर सपोज टू वेयर दैट, बट एक डॉक्टर ऐसा है जो कि ओवरऑल भी नहीं पहनता, लैब कोट भी नहीं पहनता. ठीक है, अब he should have the flexibility कि वो अपने आप को change करें and according to the circumstances he should wear that पूरी जो वो पॉलीथीन वाली वो शीट होती है. अगर वो flexibility show नहीं करेगा तो ultimately he is not being flexible enough and he is being वो एक harm create कर सकता है. तो you should try to be flexible according to the circumstances in which you are dealing. Handle self-criticism or criticism by patients and colleagues. Obtain and value the second opinion on clinical matter. ठीक है, अगर आपको किसी पेशेंट ने कहा है कि मैं किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ, तो आप उस चीज को पर्सनल होके ना सोचें. आप अंडरस्टैंड करें दैट ये पेशेंट का राइट है सेकंड ओपिनियन लेना. दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी अनयूजुअल. Demonstrate effectiveness as a member of the team as well as a leader. Attitude towards the society. Exhibit sensitivity towards social, ethical, and legal aspects of healthcare provision. Offer cost-effective services, which is very important. You should always prescribe cost-effective drugs, and you should try to make sure कि financially आप patient को बहुत ज़्यादा burden ना बनाएं. ठीक है, so this is a pie chart जो कि ideal treatment provider या एक healthcare professional के लिए है. Knowledge होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए. नॉलेज के लिए बेसिक्स ऑफ HIV, टेक्निकल नॉलेज हो, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, एवरी नॉलेज दैट अ पेशेंट दैट अ डॉक्टर मे रिक्वायर इन अ हॉस्पिटल सेटअप. ठीक है बच्चों, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा छोटा सा टॉपिक है कि हम एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नो मैम. ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इन प्रोफेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए आपका. सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप देखने में एक डॉक्टर लगने चाहिए हो, आप प्रोफेशनल लगने चाहिए हो. आप ऐसे घर के हालत में उठ के ना आ जाओ कि पेशेंट भी कहे कि ये पता नहीं डॉक्टर है कि ये कौन है ये ना. यू शुड हैव अ प्रोफेशनल अटायर. Respect for time and punctuality. Grasp the knowledge about patient under care. Availability to the patient होना चाहिए.
कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपको पता हो कि आपने ये काम अच्छे तरीके से करना है, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि ये काम आज मैं सुबह उठ के हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, आपके माइंड में ये बात हो। इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग पेशेंट्स फाइंडिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये वही बात दोबारा रिपीट है। इसका स्कोर होता है 1 to 10 of how professional you are. 1 is very poor, 2 to 4 is not desirable, 5 to 6 is average and needs improvement, 7 to 8 is good, and 9 to 10 is exemplary and can be a role model. So this is a score of how professional you are as a healthcare professional. ठीक हो गया? So this was all about today. Any question बेटा किसी के? कुछ समझ आया तुम लोगों को? कुछ सुना है कि नहीं सुना? अच्छा, दूसरी बात ये कि आई वांटेड टू अनाउंस द क्विज 5 जून को बच्चों आप लोगों का क्विज होगा। फर्स्ट 7 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे उसमें। ठीक हो गया? और टाइमिंग मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगी। इट विल बी इन द इवनिंग टाइम। ठीक है, इवनिंग में होगा 7 o'clock या 8 o'clock। LMS पे MCQ बेस्ड होगा एंड फर्स्ट 7 लेक्चर्स आर इंक्लूडेड। मैम जी मैम 5th को हमारा एक और क्विज है। कोई बात नहीं बच्चों, इट्स ओके। मैम आप 5th के बाद ले लें 6 को या 7 को। नहीं बेटा, पहले मैंने दूसरी डेट्स भी रखी थी लेकिन हर एक का कोई ना कोई क्लैश आ रहा है उसमें ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 300+ स्टूडेंट्स के सारे क्लैशेस को जो है वो हम देख सके। कोई ना कोई इस तरह से हो जाता है। तो फर्स्ट 7 लेक्चर्स होंगे और रात में होगा 7-8 बजे ओपन बुक बेटा क्विज है। कोई इतना आई थिंक इतना इशू होना नहीं चाहिए आप लोगों को। LMS पे आप लोग देते ही रहते हो और मोस्ट लाइकली रात को 8 बजे या 7 बजे मैं रखूंगी बिकॉज शाम में आप लोगों की कोई क्लासेस नहीं होती, तो टाइमिंग यूजुअली मैं फिर इवनिंग का ही रखूंगी आप लोगों का। मैम FAQs का होगा? हाँ जी, ठीक है। 15 MCQs या 20 MCQs होंगे। छोटा सा कोर्स होना है आपका, 10% उसकी वेटेज है। तो ठीक है, फर्स्ट 7 लेक्चर्स हैं। 6 हमने आज कंप्लीट कर लिए। 7th जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को कर लेंगे। तो मंडे को करेंगे और फिर आपका क्विज जो है वो सैटरडे को होगा। तो आई थिंक यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम अप टिल नाउ। तो ठीक हो गया? यस मैम, टाइमिंग फिर आप 7:30 के बाद रख लीजिएगा क्योंकि 7 बजे वो क्विज भी है। ठीक है, मैं टाइमिंग जो है वो एडजस्ट कर लूंगी। रात 9 बजे रख लूंगी। कोई इशू तो नहीं? रात 9 बजे नो मैम, ठीक है? थैंक यू। नो ठीक हो गया? मैम। ठीक है, क्योंकि ठीक हो गया। चलें बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तब तक के लिए सब ख्याल रखें अपना। एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू LMS पे कोई हाँ, दूसरी बात ये मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ, कुछ से पहले मुझे बता दें प्लीज कि कोई एनरोल है या नहीं एनरोल। ठीक है, ये ना हो कि कुछ सैटरडे वाले दिन हो। सैटरडे मेरा ऑफ डे होता है, मैं घर पर हूँ और आप लोग मुझे कुछ से 1 घंटा पहले कह रहे हो कि मुझे LMS पे एनरोल कर दें। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इफ यू आर स्टिल एनरोल्ड ऑन LMS तो काइंडली मेक श्योर कि आप अपने डेजिग्नेटेड सेक्शन में एनरोल्ड हैं। ठीक हो गया? ओके जी, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। एंड तहजीब बेटा 15 to 20 MCQs होंगे एंड 1 minute फॉर ईच MCQ विल बी गिवन। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।